87 designers across men's and women's wear and accessories from 15 cities across India. At Lakme Fashion Week, we believe in getting the best of fashion expertise from all around the world. Last year's Summer Resort edition featured Bibu Mohapatra. This season, Naeem Khan, the Mumbai-born New York-based designer whose clientele includes Michelle Obama and several leading Hollywood actresses, will showcase in India for the first time. At Lakme Fashion Week, we're equally excited to be the backstage artists that give the women who walk on the ramps the makeovers that you see and reinvent them for the shows that we all see and love. This year and this season, I'm extremely excited to announce our creative collaboration with Namrata Joshipura, who will be the Lakme Fashion finale fashion designer for the season. There's a lot of exciting conceptual work that we've been doing with Namrata to put together our collection for the season. And you'll hear more on that soon. I'm going to keep this short and sweet and try not to do that. We're delighted to be associated with the Lakme Fashion Week platform, not because I can sell more minutes, but because it's very, very seriously followed by Young India, our target audience. Now, the interesting thing about Young India, unlike people, when I was in my 20s, I didn't have the social conscience, but Young India today believe in causes. So I'm very happy to hear about yours. We have been, at ASL, we've been associated with Seva Tiger, a cause that we hold very close to our hearts. And 4 years ago when we started, there were 1,400 tigers. There are 1,700 and something now. कुछ लोग रंग बदलते हैं गिरगटों की तरह, कुछ लोग आवाज़ बदलते हैं मदारियों की तरह, कुछ हवाएं दिशा बदलती हैं बवंडरों की तरह. लैक्मे फैशन वीक के लोग अपनी टीम ही बदल लेते हैं कैलेंडरों की तरह. He taunted me on this and I replied to him that we believe in the theory of soul. This is a movement. This is a soul. Lakme Fashion Week will not die. Whether today we people are sitting on the dais, tomorrow someone else will be here. Earlier it was Anil Chopra, Ravi Krishnan, now the new team of young talented Saket, Purnima. The people have changed, but the spirit is not. The soul will never, like we all believe in Gita, we all believe in the theory, our soul never dies. The soul is Lakme Fashion Week. इस बार हमारा भी शो अलग बहुत मैंने 2 साल के बाद हम दिखा रहे हैं फैशन वीक में. हर वक्त जब हम शो करते हैं इस वक्त का भी शो अलग होगा. इस वक्त का शो ये एक क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होगा जो हमारे देश में पूरे साल 1.5 साल 2 साल से हो रहा है और उसके बारे में शो है. कॉज कोई भी नहीं है क्योंकि कॉज बहुत सारे लोग कर चुके हैं. हम सिर्फ इतना ही लोगों को एक आईना दिखाना चाहते हैं. This time for me at Fashion Week is going to be very special because for the first time I am doing something with an NGO. It's called Swadesh, which is run by very two dear friends of mine, Zareen and Rani. For me, Fashion Week in 2013 means fashion for a cause. It's about rural empowerment. I have travelled to the interiors of Maharashtra where this cause really works. The kind of work that they do for the people in the interiors of Maharashtra is brilliant, and that's what my inspiration for this entire season is, for this collection is. It's about the colors of earth, the colors of the sun, the colors of fire, the colors of energy. The whole presentation of the show that I'm doing is not just about a fashion show. It's about the whole feel of what Swadesh stands for. इस दफ़ा की कलेक्शन इंस्पायर्ड है मुंबई से और मुंबई जैसे मैं हमेशा बहुत फॉन्डली बोलती हूँ मेरा गांव है क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ. सो हमारी पूरी कलेक्शन मुंबई से इंस्पायर्ड है और मुंबई के वेरियस एलिमेंट्स से मुंबई की टैक्सीज़, मुंबई की रिक्शा, मुंबई का बॉलीवुड, मुंबई के डब्बा वालाज, मुंबई के मच्छी वालाज, मुंबई के सारे एलिमेंट्स इस दफ़ा इंस्पायर किए हमें इस कलेक्शन बनाने में. तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कलेक्शन को लेकर के क्योंकि इस समय कलेक्शन बन रही है शॉप में. सो सब क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है, कलेक्शन बन रही है.
और इस बार शोकेसिंग के बारे में भी हम काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि द म्यूज़िक जो हम हमेशा प्ले करते हैं जब शो रन होता है, इस बार हमने बहुत मेहनत करके म्यूज़िक क्रिएट करवाया है। तो एक बहुत ही टैलेंटेड बैंड है, रॉक बैंड है जो कॉल समुंदर, जो म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है, जिसने लिरिक्स भी हमारे शो के लिए लिखे हैं। और यही म्यूज़िक एंड हो रहा है बहुत टैलेंटेड सिंगर विकास भल्ला से। तो म्यूज़िक पूरा हमारा अभी क्रिएट हो रहा है शो के लिए, और हमारे शो में बहुत अच्छे अच्छे हम प्रॉप्स डाल रहे हैं जो मुंबई को दिखाते हैं, सिग्निफाई करते हैं। और ये प्रॉप्स भी अभी शॉप में हमारे यंग एस्पायरिंग डिज़ाइनर से बन रहे हैं। तो प्रॉप्स बन रहे हैं, म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, कपड़े बन रहे हैं, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है इस समय हमारे लिए। Well, all of my clothes tend to be different from the norm or the convention. That's the essence and the identity and the idea behind the entire brand. If it's just a straight shirt with a normal collar, I wouldn't do it. I would do something different with it. The best way to actually exemplify this for you guys and your audience is I'm wearing a shirt right now, but the top half is missing entirely. What people can't see is it does still have sleeves. The blazer I'm wearing, for example, doesn't have a lining or anything inside it. It's just a single layer of cotton. So yeah, basically all the clothes that I do are just something slightly different from what is